बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? How are you, my people, my family? Today we are going to install Oracle Apex 20.2 and ORDS 20.3 with database 18C in Windows 10 इंशाल्लाह quickly। आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से Oracle Apex 20.2 और ORDS 20.3 को इंस्टॉल करते हैं database 18C के साथ Windows 10 में इंशाल्लाह। जल्दी से। So first we are going to extract Oracle database 18C and ORDS 20.3 and Apex 20.2 in a folder where we want to install it. Keep in mind, while extracting Oracle database 18C and ORDS 20.3, we will create a separate folder with the name database and ORDS respectively. So it will extract the file in this folder, in database or in ORDS. हम database और ORDS को extract करते हुए folder बनाएंगे database DB और ORDS के नाम से। तो वो तमाम फाइलें उन फोल्डर्स के अंदर ही एक्सट्रैक्ट करेगा। डेटाबेस की डीबी के अंदर करेगा, ORDS 20.3 की ORDS के फोल्डर में करेगा। लाइक दिस, इस तरह से फाइल्स आर कमिंग, फाइल आ रही है। एक्सट्रैक्शन हैज डन, एक्सट्रैक्शन हो चुकी है। अब डेटाबेस का सेटअप चलाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स के साथ। Now run database setup with administrator rights. Create and configure a single instance database. Hit next button. Next का बटन दबा दीजिए। Create and configure a single instance database रहेगा। Desktop class. Hit next button. Next का बटन दबा दीजिए। Use Windows built-in account. You can use other option as well. Hit next button. Next का बटन दबा दें। हम use Windows built-in account इस्तेमाल करेंगे। आप कोई दूसरा ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Yes. Assign global database name, password and confirm password from your choice. Uncheck create as container database option. Global database name, password और confirm password अपनी मर्जी से दे दीजिए। Create as container database के ऑप्शन को अनचेक कर दीजिए। Next का बटन दबा दीजिए। Hit next बटन। Yes. Install का बटन दबा दीजिए। Hit install बटन। डेटाबेस इंस्टॉलेशन हैज कंप्लीटेड, डेटाबेस की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। क्लोज का बटन दबा दीजिए। हिट क्लोज बटन। ओपन SQL Plus, connect with sysdba and check SGA maximum size by running show parameter SGA, and if it is less than 3000 MB then increase it by running the command which is coming। SQL Plus खोलें, कनेक्ट हो जाए sysdba से और SGA मैक्सिमम साइज पता करें। शो पैरामीटर SGA की कमांड चला के और अगर 3000 MB से कम हो तो उसको इंक्रीज कर दें। ये कमांड चला के भी आ रही है। It is less than 3000 MB, ये लेस देन है 3000 MB से। सिस्टम
सिस्टम ऑल्टर्ड शट डाउन डेटाबेस बाय रनिंग शट इमीडिएट कमांड। डेटाबेस को बंद कर दीजिए शट इमीडिएट की कमांड चला के। एग्जिट दिस SQL प्लस, बाहर आ जाए SQL प्लस से। ओपन न्यू SQL प्लस, कनेक्ट विद sysdba एंड स्टार्ट डेटाबेस बाय रनिंग स्टार्टअप कमांड। दोबारा से SQL प्लस खोलें, कनेक्ट हो जाए sysdba से और डेटाबेस को स्टार्ट करें स्टार्टअप की कमांड चला के। Now open command prompt and reach where Apex folder is available. कमांड प्रॉम्प्ट खोलें और उस जगह पे जाएं जहाँ एपेक्स का फोल्डर मौजूद है। और इंस्टॉल कर लें एपेक्स को and will install Apex. Connect with sysdba and install Apex. Connect with sysdba से और इंस्टॉल करें Apex को। Oracle Apex installation has done. Oracle Apex की installation हो चुकी है। अब हम ये कमांड चलाएंगे। Now we run this command. User will be admin. Provide email and password from your choice. User admin होगा, email और password आप अपनी मर्जी से दे दीजिए। Now we run this command. अब हम ये कमांड चलाएंगे। Provide password from your choice. पासवर्ड आप अपनी मर्जी से दे दीजिए। Now come to SQL Plus and run this command. अब हम SQL Plus में आएंगे और इस कमांड को चलाएंगे। User user altered. Exit this command prompt. ये वाली कमांड प्रॉम्प्ट को बंद कर दीजिए। Open new command prompt with administrator rights and reach where ORDS folder is available. नया कमांड प्रॉम्प्ट खोलें एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स के साथ और वहाँ जहाँ ORDS का फोल्डर अवेलेबल है और वहाँ जाने के बाद ये कमांड चलाएं। Now run this command. Now provide a configuration path. अब configuration path दे दीजिए। Enter. 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 Your port will be different. आपकी पोर्ट मुख्तलिफ हो सकती है। Option 2 press enter. Option 2 एंटर का बटन दबा दीजिए। Provide your set. अपने सेट दीजिए। Your set will be different. आपकी सेट मुख्तलिफ हो सकती है। Enter. Provide password and confirm password. पासवर्ड और confirm password दीजिए। Password और confirm password. Provide password and confirm password. Enter. 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 Enter.
enter, enter, provide password and confirm password, password और confirm password दे दीजिए, enter, provide password and confirm password, enter. Now copy image folder from Apex installation folder and paste it. कॉपी कर लें इमेज का फोल्डर को Apex के इंस्टॉलेशन फोल्डर में से और यहाँ चस्पा कर दें. Enter, provide Apex static resource location. इसको पाथ दे दीजिए. स्टैटिक रिसोर्स लोकेशन को इमेज तक के फोल्डर का. प्रोवाइड पाथ इमेज फोल्डर. एंटर, एंटर, डिफाइन योर डिजायर पोर्ट. अपनी मतलूबा पोर्ट दे दीजिए या 8080 को ही रहने दीजिए और एंटर कर दीजिए. अब हम Apex चला सकते हैं. Do not close this command prompt. इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद मत करिएगा. Oracle Apex 20.2 has installed. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.